So in the case of molecular point group, so you can have one very important rule, that is, you can say that if you first you can check principal axis, whether principal axis are only one in number or it may be more than one in number. If it is more than one in number, so at that time you can have a special point group. Special point group is nothing but tetrahedral, octahedral and icosahedral. So next you go for checking point of inversion I, whether I is there or not. If I is there, then you can have a octahedral or icosahedral. If I is absent, then you can have a tetrahedral geometry. And the second one is, if molecule is linear, then you can have only two possible point group, D infinite H and C infinite V. And if molecule having only one principal axis, then you will going to check very important rule, that is it principal axis is perpendicular to same number of C2 axis, that is n whatever n-fold axis is there, so same number of C2 axis is there or not. If it is there, then symbol must be used is D. D. And yes, and if it is not there, then you can use symbol C. C. Yes. Next, you are going to check sigma H. If sigma H is present, then your point group become D and H. If sigma H is absent, then you're looking for sigma D plane. If it is there, then it become D and D point group. If both the plane are absent, then you can have a simply DN point group. Similar way, Cn is not perpendicular to NC2. At that time, again you can have a three possibility: CNH, CNV, and Cn. So first you will going to check sigma H. If sigma H is present, then you can have a CNH. If it is absent, then you can have a CN. You can yes, looking for sigma V plane. If it is there, then it's a CNV, and if sigma V is also absent, then you can yes only Cn. So this is we already covered. Suppose molecule does not have any principal axis, then again three possibility: CS, Ci, and C1. So next you check this sigma plane. If sigma plane is present, then it become have a CS point group, and if sigma S is absent, then you can only have a Ci or C1. So next you go for point of inversion I. If I is present, then it has point group Ci, and if I is absent, then it is C1. So now see, this is very important molecule, that is PCl3F2 trigonal bipyramidal. Two fluorine are there at two axial position and three chlorine are at three triangular position. So now you tell me which one is principal axis and it is passing through which atom? पिंक से पास होगा परपेंडिकुलर. Yes, pink or blue, दोनों fluorine और phosphorus में से pass होगा. See, this one become your principal axis, that is called C3, passing through both the fluorine, blue color fluorine, and phosphorus. This one, this is your principal axis, that is called C3. Okay, how many C2 are there? Yes sir. Yes sir, C2 is there. C2 are गीन से पास होगा गीन. C2 जो है ना वो it is passing through each Cl. So there are three C2 which are in the plane and principal axis is perpendicular to the plane. So this rule is follow: C3 is perpendicular to 3C2. 3C2. So which D symbol होगा. is used? D. D3, yes. Now next you go for sigma H plane. Next you go for sigma H plane. Sigma H is already there. This is Yes, it is sir. passing through this 3Cl. Yes, This sir. is your sigma H. Mobile pen. Okay. And above and below you will have a mirror image. So therefore its point group become D3H. This is the point group. Of course, 3 sigma V are also there. Okay. But we are Yes, looking just sigma H. Now see, this is platinum Cl4. It's a square planar molecule. Which one is your principal axis?
C4, it is on your side. How many other C2? C2. There are 4 C2 which are perpendicular to principal axis. See, this is your principal axis. Perpendicular to it, there are 4 C2, and therefore symbol used is D. D. Now, is there sigma H is there? Yes, sir. This is sigma H, that is plane of your mobile, because principal axis is perpendicular to your mobile. So this is a sigma H. And how many sigma V are there? Point group is D for H. Sigma V are, this is 1, 2, 3, and 4. Out of 4, see, there are 2 different type of sigma V. So whenever sigma V is more than one type, then sigma V that passing through minimum number of atom, that is we call diagonal plane, sigma D. And sigma V which passing through maximum number of atom, that is we simply call sigma V. Of course, sigma D is a types of sigma V plane in this molecule, but passing through maximum number of atom, that is we call sigma V, and minimum number of atom, that is called sigma D. Yes, and point of inversion I is also present in this molecule. Now, in the case of xenon oxytetrafluoride, so in this molecule, see, xenon is a 18 group element, so you know very well it has 8 electrons in the outermost. Yes, no, its shape is square pyramidal. 8 electron is there, 4 electron is used with 4 fluorine atom. Okay, 4 fluorine form 4 single bond, and 1 oxygen form double bond. So 1 lone pair. So there are 6 pair, and 6 pair is there. So expected shape is octahedral. Expected shape is octahedral. 1 lone pair remains above the plane, and another which is 1 pair is below the plane. So this shape is called square pyramidal. See, it is not a seesaw. Seesaw is a K shape. It's a square pyramidal. Okay. Seesaw is in the case of SF4. See, where you can have a 4 fluorine atom and 1 lone pair. That is the case is, of course, it is in this case fluorine, here also fluorine. This is a seesaw geometry. It is a part of trigonal bipyramidal expected shape, but here it is a part of octahedral expected shape. So see, this is, you can say, seesaw. Okay, this is not the seesaw. Now tell me, which one is the principal axis in this molecule? Which one is the oxygen xenon pass oxygen? Yes, passing through oxygen and xenon. That is called, what is name of that axis? C4. Yes, it's a C4 axis. So it is passing through oxygen and xenon. This is called C4 axis. So C4 is a principal axis. Now next question is, how many C2 are there? This is your C4. 4 C2. There is, where is first one? Where you can take? Xenon 14. ऐसे नहीं ले सकते आप C2. No C2. Yes, no C2. Why? सर ऊपर ऑक्सीजन और नीचे लोन पेयर है तो वो Yes, definitely. So once you give the rotation at 180, so oxygen comes to position of lone pair, and that is non-equivalent structure, and that's why you can't take C2. Good. So only C4 is there, but there is no 4C2. Now, so symbol use is C. Okay. Next, you check the sigma H. Can you have a plane which is perpendicular to principal axis? ऐसे ले सकते हो आप plane? नहीं, sigma H. Sigma H is not there because above the plane, yes, there is oxygen, but below it there is lone pair, so there is no mirror image. But you can have a sigma V. 4 sigma V are there. See, this is 1, this is 2, this is 3, and 4. So 4 sigma V plane are there, and that's why it has point group 4V. Which point group is there? C4V. What is point group for this H2O2? They are non-planar geometry. There is no plane. See, one dash and wedge projection is there.
So you can say that there is no plane of symmetry. So the point group become E. only C2. C2 axis is there. Of course, you can give the rotation at 180. This is on your side. So this is goes on back side. This is comes on front side. C2 axis is there. So it has point group only C2. See. Now in the case of gauge ethane, this is a gauge conformation of ethane. Okay. So this is a C3. This is C2. There are three C2. See, C3 is perpendicular to 3C2 in the gauge conformation. So what is its D. D3? Symbol is D3. But see, they are of course non-planar geometry. So you simply take it as this is not a eclipse or like that, but it is simply gauge type conformation, and therefore they are it is a non-planar geometry. There is no any plane. So you can have a simply there is no diagonal or there is no sigma h. So you can have a simply point group D3. Cyclohexane. See, this is the geometry of cyclohexane. Look at here. This is a C3 from the center, similar to gauge type arrangement. See, this part 1, 2, and 3, which is on back side of 4, 5, and 6. So you can have a see this is C3 axis, and these are the three C2. And these are perpendicular to C3, so symbol used is D3. You see these three are sigma D. This conformation is like two staggered type arrangement. यहाँ sigma D है, see one is passing through 2 and 4 ऐसे. Second one is 1 and 6. Okay, so you can have a point group. Cross plane है इसमें diagonal, so its point group become D3. D3. D. What is point group in the case of both conformation? There is principal axis. Perpendicular planes. Yeah, but which one is the principal axis? C3. C2. Sir. See, right hand side part comes to left hand side part comes to right hand side. This is the C2 axis. Now have you any idea about, see there is no other two C2 which are perpendicular to this C2, and therefore point group symbol uses C2. Now there is there horizontal plane is there? सिग्मा एच है इसमें? Yes sir. कहाँ पे है? ये प्रिंसिपल एक्सिस है, इनको परपेंडिकुलर ले सकते हो? नहीं. But this plane is called Sigma. this sigma h cannot taken. But this plane is there. This is called vertical plane. Sigma v, and therefore point group is C2v. Like B bend type shape is there, like V shape or like shape of the H2O. That type of shape is there. So it's a C2v. What is the point group in benzene? C6. This is a principal axis, highest pole axis, and C6 is perpendicular to 6C2. यहाँ पे भी सी आपके पास 3 सिग्मा 6 टाइप की सिग्मा भी है. सो सिग्मा बी इज मोर देन सी. ये रूल्स फॉलो होता है कि C6 इज परपेंडिकुलर टू 6C2. सो एट दैट टाइम इफ मॉलिक्यूल हैविंग मोर देन one type of sigma v, so at that time sigma v which passing through minimum number of atom is called sigma d, and maximum number of atoms are called sigma v. Okay, in this way. So of course here symbol used is d, and you can also have a sigma h, so you can use the symbol d. इसी तरह से d symbol, because 6 C2 are there which are perpendicular to C6. Also point of inversion I is there. So point group in this molecule is D6H. In the benzene it's a D6H. See ferrocene, eclipsed ferrocene is similar to, you can say, eclipsed ethane. There is C5 is a principal axis, and there is five other C2 which are perpendicular to C5. So symbol use is D5H. D5, and you can have a see here horizontal plane. See this is your C5 axis. Look at here.
and this is sigma h. सर साइक्लोहेक्सेन और बेंजीन में डायगोनल, सर साइक्लोहेक्सेन में डायगोनल प्रेजेंट था बट बेंजीन में नहीं है। बेंजीन में भी डायगोनल है ना, ये बेंजीन है, यहाँ डायगोनल बताया ना, 3 डायगोनल पासिंग थ्रू मिनिमम एटम, दैट इज कॉल्ड डायगोनल, एंड मैक्सिमम एटम है उसको बोलेंगे ओके हाँ सर ठीक। सिग्मा वी। इसके लिए ये देखना है, ये रूल्स फॉलो होना चाहिए, रूल्स। सी एन इज परपेंडिकुलर टू एन सी टू, इसमें डायगोनल नहीं लिखा है, ये किसमें, C4V में। C4V वाला है वो कौन सा था, आई थिंक ये वाला C4V जो XCO वाला था उसमें नहीं लिखा है इसमें, तो जो उसका रीजन है, इस केस में मैंने सारे प्लेन जो है ना वो सिग्मा वी बताए हैं, क्योंकि उसमें वो रूल्स फॉलो नहीं होता है, CN इज परपेंडिकुलर टू NC2। ओके, तो सारे जो है वो उसको सिग्मा वी कंसीडर किया, बट जब वो रूल्स फॉलो होगा कि CN इज परपेंडिकुलर टू NC2, तो उस केस में एक से ज्यादा सिग्मा वी है, तो उसमें जो मिनिमम नंबर ऑफ एटम में से पास होगा उसको बोलेंगे सिग्मा डी, एंड रेस्ट ऑफ द प्लेन्स आर सिग्मा पी। ओके, इज इट क्लियर? Yes, sir. सर साइक्लोहेक्सेन में हॉरिजॉन्टल प्लेन तो प्रेजेंट था ना, जो सिमेट्री वाला स्ट्रक्चर है। सो दिस इज साइक्लोहेक्सेन, यस सर। इसमें सिग्मा एच नहीं है सर, कैसे ले सकते हैं आप? ये मॉलिक्यूल आप देखो यहाँ पे, यहाँ से ऐसे, यहाँ ऐसे आप प्लेन ले सकते हो, so this is C3 एक्सिस। सर उसमें नहीं सर, ये जो सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है। किसमें, ये वाला बोल रहे हो आप, ये वाला, सर जिसमें ये जो 5 ये एरो वाला, है ये हाँ ये सर वाला, हाँ हाँ। इसमें ये ऐसी स्ट्रक्चर देखने के लिए मैंने ऐसा लिखा है। सी इसमें और बेंजीन में काफी डिफरेंस है। सी बेंजीन में क्या है, बेंजीन में सी बोल दे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, सो हाइब्रिडाइजेशन कौन सा रहेगा, sp2, सो शेप बिकम प्लेनर, सो सी ये सारे एक ही प्लेन में रहेंगे, दीज आर इन द प्लेन ऑफ लैपटॉप। ओके, नाउ यहाँ ओके पे सी सिंगल बॉन्ड है, सो व्हाट इज इट्स हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन इज sp3। यस। ओके, यहाँ पे sp3 हाइब्रिडाइजेशन रहेगा, दिस इज वन थिंग्स। दूसरा जो है स्ट्रक्चर है, इनकी वजह से सिस्टेरिक ऐसे स्ट्रक्चर ऐसे नहीं रहेगा, एक वन इज ऑन फ्रंट साइड अनदर इज ऑन बैक साइड, ऐसे रहेगा। ओके, अभी आप यहाँ से सेंटर में ओके से C6 एक्सिस भी नहीं ले सकते, प्रिंसिपल एक्सिस, क्योंकि ये शेप ऐसे नहीं रहेगा, ऐसे आइदर गोज इनटू दिस वन चेयर फॉर्म और इट इज रिमेन्स इन इक्लिप्स फॉर्म, वैसे शेप रहेगा। इसलिए आपको शेप देखना है कि चेयर फॉर्म है तो यू कैन हैव ए, बिकॉज पॉइंट ग्रुप इज रिलेटेड टू शेप। ओके, तो ये जो चेयर फॉर्म है तो D3D आ गए, इसी तरह इक्लिप्स, इसलिए मैंने यहाँ पे बोट फॉर्म भी लिखा है, बोट कन्फर्मेशन, तो बोट में वो उनका पॉइंट ग्रुप है वो C2 ही आ जाएगा, ओके सर। ये स्टेबल नहीं होगा इसलिए, है ना। बेंजीन में तो प्लेनर है तो कोई चांसेस ही नहीं है, शेप रिमेन्स प्लेनर, so you can have a D6H. Eclipsed Ferrocene also have a D5, and sigma H is there, so it's a D5H. Staggered is similar to staggered ethane. Again, principal axis is this one, C5 passing through both the cyclopentyl ring, and you can have a Fe. And there are 5 C2 which are perpendicular to principal axis. So you can have a symbol is D5. But here see there is no sigma h. You cannot take a plane which is perpendicular to principal axis in this way. You cannot take this sigma h. This is absent. But you can have a B. sigma d. Okay, diagonal plane. तो इसे AP से पास होगा, sorry. Yes. So phi sigma d is there. Therefore, point group is d phi d. Of course, point of inversion I is also there. Now triphenyl phosphine. Which one is a principal axis? P से पास होगा, P से बाहर, perpendicular. सी ये रिंग जो है ना वो नॉन प्लेनर है, एक साइड हमारी साइड है और दूसरा पीछे की साइड है। पी फॉस्फोरस में से कौन सी एक्सिस होगी? सर इन बिटवीन फास्फोरस, व्हिच इज व्हाट इज नेम ऑफ दैट एक्सिस? C3।
C3, good. So this is your C. This is the structure exactly. It's a shape. Now this is your C3 axis. Now next question. C3 is not perpendicular to 3C2. You cannot take here C2. What is the reason? यहाँ पे आप ऐसे प्लेन में नहीं है C2 नहीं ले सकते. प्लेन Plane. में Yes. नहीं है This जी is. See, this part is on our side. This ring is in the plane. This is on back side. Look at here. प्लस से तो आपको जो है ना वो सी इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर नहीं मिलेगा, है ना. So there is no C2, only C3 point group and planarity भी नहीं है. So definitely plane is not there because यहाँ हमने डार्क लाइन फ्रंट साइड वाला बताया है. यहाँ से प्लेन डिपार्ट हो जाता है. तो दे आर नॉट इन द सेम प्लेन क्योंकि यहाँ स्टीरियोकेमिस्ट्री शो की है डेल्टन वेज प्रोजेक्शन. सो जैसे हाइड्रोजन पेरोक्साइड में ड्रॉ किया था. सो इट हैज प्लेन इज एब्सेंट. सो पॉइंट ग्रुप इज ओनली C3. इस केस में क्या होगा, यहाँ पे आप देखोगे तो NH जो है 3NH वो फ्रंट साइड में है, हमारी साइड है. बाकी के जो 3 NH है वो एग्जैक्टली बैक साइड है. तो यहाँ प्रिंसिपल एक्सिस C3 तो है ही, बट यहाँ एक और चीज है जो इसमें नहीं थी. वो कौन सी चीज? सर सिग्मा है और प्लस परपेंडिकुलर एक्सिस भी है. यस. सो सी इसमें क्या है, सिग्मा तो नहीं, वो प्लेन तो होगा ही नहीं. सी प्लेन तो इसमें भूल जाना, प्लेन होगा ही नहीं क्योंकि जैसे मैंने स्टीरियोकेमिस्ट्री ड्रॉ किया है डार्क लाइन एंड यस सर. डॉटेड लाइन, तो प्लेन तो एब्सेंट है. बट एक्सिस ही रिकॉग्नाइज करना है. C3 तो है ही, C3 इज देयर, बट इनको परपेंडिकुलर 3C2 है या नहीं वो मैं पूछ रहा हूँ. ऐसे आप C2 ले सकते हो या नहीं ले सकते हैं? यस सर. ले सकते हो क्योंकि ये आगे वाला जो NH है वो पीछे जाएगा, पीछे वाला आगे गया. इसी तरह कितनी C2 है? 3C2 3C2 are there which are perpendicular to C3. So symbol use is D3. what? So its point group is only D3. Plane तो है नहीं. ओके. So point group is only D3. तो इस केस में प्रिंसिपल एक्सिस कौन सी रहेगी? रूट से पास होगी परपेंडिकुलर. यस C3 तो है ही. ओके गुड. बट इसमें C2 होगी. इससे आप C2 नहीं ले सकते क्योंकि ऑक्सीजन जो है ना CO बॉन्ड तो ये यहाँ आ जाएगा. सो दैट इज नॉट द इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर. सो इट पॉइंट ग्रुप इज ओनली C3. Now when we use point group C1, CS and Ci, so suppose a molecule does not have a any rotation axis. Okay, so in that case, if Cn is absent, so you can have a CS point group. तो पहले कौन सी चीज देखना है? तो ये 3 पॉसिबल पॉइंट ग्रुप है. उसमें फर्स्ट यू गो फॉर चेकिंग C1, CS, sigma plane. If it is there, then point group is CS. ऐसा जरूरी नहीं है कि I एब्सेंट होना चाहिए. I प्रेजेंट भी हो सकता है, एब्सेंट भी हो सकता है. बट सिग्मा प्लेन इज देयर, then priority is given to sigma plane. So point group becomes CS. If it is absent, then you can have a C1 and Ci. Next you go for checking I. If I is present, then point group is Ci. If I is absent, then point group is C1. That is rotation at 360. So every molecule have a C1. identity that is C1 if other point groups are absent. So see, these are some example of CS. See, look at here. This is a planar molecule. Double bond is there, but there is no any rotation axis. You cannot take axis here. You cannot take axis here. This will not give you equivalent structure. But only sigma plane is there, and therefore point group become CS. This is a Ci. This is having Ci. Its structure is like this way. Look at here. This is a staggered form. Here 2 Br is there. Here you can have a 2 Cl. And here 2 hydrogen. So there is no C3 axis. Principal axis is not there. It cannot give you equivalent structure, but you can have a here point of inversion I. Because on opposite sides there is no sigma H or sigma V. Any plane is also not there.
but you can have a C I, that is at equal distance on opposite side, equal number of atoms are there, and therefore its point group is C I. Now see here, you can see, look at here, this is a tetrahedral geometry, but all the atoms are different, so you cannot have a Cn, you cannot have any plane, you can even not have a I, so its point group become C1. Okay, is it clear? Yes, sir. Every molecule has C1. Now one things you can keep in mind for tetrahedral geometry, for example, if you having SOCl2 or SOCl or whatever is there, see any tetrahedral geometry, in that case what happens? As for example SOCl2, whatever is there. So sulfur having say 4 electron in the outermost shell, 6 electron. So one which is remains as a lone pair. 2 electron used to form double bond with oxygen. Remaining one electron is used to form bond with Cl. So see there is a 4 electron pair. Look at here, there is 4 electron pair. आपके पास यहाँ 4 पेयर है टोटल, एक लोन पेयर है एंड 3 बॉन्ड पेयर है. सो इट्स एक्सपेक्टेड ज्योमेट्री इज टेट्राहेड्रल. तो इस केस But में आप pyramidal shape. नहीं शेप तो जो भी होगा बट टेट्राहेड्रल एक्सपेक्टेड है ना. तो इस केस Yes, में sir. सी आपको प्लेन कैसे रिकॉग्नाइज करना है, उसका मीनिंग ये है कि आप ऐसे सपोज टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है मेरे पास, तो मैं कोई भी दो लिगेंड को एक ही प्लेन में कंसीडर कर सकता हूँ. हियर सी ए एंड बी इज इन अ प्लेन ऑफ योर मोबाइल एंड सी इज इन अ फ्रंट साइड एंड डी इज इन अ बैक साइड. ओके, Yes, sir. इसी तरह आप ये दोनों कंसीडर करेंगे तो बाकी दो है वो फ्रंट एंड बैक साइड आएंगे, कोई भी दो ले सकते हो. सो सी इन दिस मॉलिक्यूल यहाँ दो लिगेंड जो सेम है उसको आप छोड़ दो, बाकी के जो डिफरेंट लिगेंड है उसमें आप ऐसे प्लेन कंसीडर कर सकते हो. सी दिस इज अ प्लेन, लुक एट हियर, ये सारे आप मोबाइल के प्लेन में ले लो तो फ्रंट साइड भी Cl आएगा और बैक साइड भी Cl आएगा ऐसे. सो दिस मॉलिक्यूल हैव ए सिग्मा प्लेन, यू कैन से इट हैज प्लेन ऑफ सिमेट्री. वो कैसे पता चलेगा? तो जो दो डिफरेंट लिगेंड है उनको आप अलग प्लेन में कंसीडर कर लो तो ऑटोमेटिकली बाकी के जो सेम लिगेंड है वो इन द प्लेन रहेंगे. सॉरी, वन इज ऑन फ्रंट साइड अनदर इज ऑन बैक साइड. डिफरेंट लिगेंड है उनको इन द प्लेन कंसीडर करो. सो इट हैज सी आल्सो पॉइंट ग्रुप CS. इसी तरह से अदर एग्जांपल्स आर देयर. फॉर एग्जांपल्स दीज आर द डबल बॉन्ड, सो दे आर इन अ प्लेन ऑफ योर मोबाइल. ऑक्सीजन इज a tetrahedral, so oxygen, so this phenyl ring and hydrogen you can take in a plane of mobile, and यहाँ दो lone pair होगी, one which is remains in a front side, another which is remains in a back side. तो आप ऐसे प्लेन कंसीडर करोगे या तीन में से पास होता हुआ, तो इसका भी पॉइंट ग्रुप कौन सा आएगा? CS. CS आएगा. सी इसी तरह से यू कैन हैव ए सपोज here OH, same concept is apply here. Okay, this is a plane of symmetry, it's a CS point group. Or you can have a CCl, Br, F and F. Now you tell me plane is passing through which atom? कार्बन से पास होगा. नहीं कार्बन कार्बन तो से. है ही, बट दो लिगेंड कौन कौन से हैं? फ्लोरीन. फ्लोरीन एंड फ्लोरीन में से नहीं होगा. अगर फ्लोरीन तो ऐसी मिरर इमेज चाहिए तो ये फ्लोरीन में से पास Yes, होगा तो यहाँ Cl है बैक साइड और फ्रंट साइड Br है. क्लोरीन ब्रोमीन प्लेन से पास होगा. ब्रोमीन एंड क्लोरीन से, यस. सो दोनों फ्लोरीन है वो एक दूसरे की मिरर इमेज रहेगी. सो इट हैज CS point group, point of molecular property. In this case there is C1. चारों लिगेंड अगर डिफरेंट है सो यू कैन नॉट हैव अ प्लेन. आप कोई भी दो एटम में प्लेन ऐसे फाइंड आउट करोगे तो बाकी दो है वो सिमिलर नहीं है, दे आर नॉट द मिरर इमेज. ओके, so you Yes. cannot have a plane of symmetry in this molecule. All the four ligands are different, so plane is absent, so point will become C1. but यहाँ पे only plane is there, so it has CS point group, and here point of inversion I is there. Look at here, point of inversion I is there, and therefore its point group become CI. CI. Yes. Now you tell me what is point group in naphthalene Veris principal axis?
So this is a naphthalene. Which one is the principal axis and passing through which मिडिल atom? से पास हो रिंग ये से वाला. रिंग का मिडिल से पास हो यस Yes, सर this is called which axis? C2 It is principal axis. Next आपको बाकी दो C2 चेक करना है कि whether other two C2 are perpendicular to principal axis or not. So you can have a see one more C2 over here. यस See 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. So यहाँ आप ये C2 consider करोगे principal axis. So 1 and 8 can change their position. In this C2, 2 and 3 can change their position, or you can say 1 and 4. एक C2 ये आपकी साइड है ऐसे. यस सर वही ये C2 कंसिडर Three करोगे. C2. So 1 जो है वो 5 की जगह आ जाएगा. 1 and 5 can change their position. So passing through maximum number of atoms, this one is a principal axis. So therefore C2 is perpendicular to two other C2. So symbol used is D2. D2 Next आपको देखना है sigma H. H है Sigma H is already there. See, this is a sigma H. D3 That is plane which is perpendicular to principal axis. This is your sigma H. And therefore the point group become D2H D2H. सर एंथ्रासिन का भी सेम होगा क्या क्या? एंथ्रासिन एंथ्रासिन का भी सेम ही आएगा D2H. और 9 एंड 10 नंबर कार्बन है उसमें से रिंग और प्रिंसिपल एक्सिस पास होगी. इसी तरह 3 रिंग है. ओके, सो दिस इज 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. This is your principal axis. This is other 2C2. Okay, and there is also sigma Yes, H similar. So you can have a D2H. Good. What is point group in trichlorobenzene? Symmetrical trichlorobenzene. Which one is the principal axis? सर बेंजीन से परपेंडिकुलर बेंजीन कौन सी है? नेम क्या देगी इसको? D3H प्रिंसिपल एक्सिस कौन सी आएगी? इट्स C3 आएगा C3 आएगी. Cl की जगह C6 नहीं ले सकते, otherwise Cl goes to position of hydrogen. So that is different geometry, and therefore you can take here C3 is the principal axis, and there is other 3C2 is there. See, this is 1C2. The principal क्लोरीन axis से पास होगा principal axis is पास होगा perpendicular to plane, and these are the 3C2 D3H which are in the plane. Yes. So C3 is perpendicular to 3C2, and therefore symbol used is D3, and you can also have a sigma H that is plane of your mobile. So point group become D3H. What's about in the case of 1,2-dichlorobenzene? Where is principal axis? दो क्लोरीन से मिडिल से पास होगा बॉन्ड से मिडिल के Yes, this one. This is called C2. It is not perpendicular to other two C2. ऐसे आप नहीं ले सकते. So this is the principal axis. C2 is a principal axis. It is not perpendicular to two other C2, and therefore symbol use is D2. Sorry, symbol use is नहीं C2. होगा Yes, and you cannot have a sigma H, but sigma V is there. यस सिग्मा भी मिडिल से पास होगा This is one sigma V, and another one is plane of your mobile. This is also sigma V. You cannot have a sigma H, and therefore point group become C2V. ठीक What is the case of chlorobenzene? क्लोरीन के बराबर पास होगा क्लोरीन और कार्बन है ना This one is your C2. Again, see, this is sigma V, and second one is plane of mobile, that is sigma V. यस There is no C2C नो sigma H H plane, नहीं and yes, so point group become
C2B. C2B. What is the case of this geometry? एक गेट 2011 में पूछा गया था क्वेश्चन. What is its point group? बोरिक एसिड. क्या उसकी तरह सिमिलर है? This is your principal axis which is called C3. परपेंडिकुलर होगा, प्लेन पे Okay? परपेंडिकुलर. तो इसको परपेंडिकुलर से आप 3C2 नहीं ले सकते. नहीं. So C3 is there, but perpendicular to it there is no 3C2, and therefore symbol use is C3. C3. Next sigma H देखना है. Sigma H is there, that is plane of your mobile, क्योंकि principal axis perpendicular है. So point group become C3H. So this is the already asked in the GATE exam. Or xenon tetroxide. What is this point group? उसका स्ट्रक्चर पेंटागोनल पिरामिडल. No, it's so simply first you decide its shape. Xenon is 18 group element. सर SF4 की तरह होगा. नहीं ऐसा 4 भी नहीं. 18 group है, oxygen is a divalent. 8 इलेक्ट्रॉन है outermost cell में, 1 oxygen required 2 electron. ऐसे 4x oxygen है. So all 8 electron are used up and you are getting 4 double bond. कितनी पेयर हुई? 4 पेयर. Total 4 pair. And all the 4 pair are bonding pair. Lone pair is 0. Lone pair is 0. All the pair are bonding pair. The 4 pair are there. So it's a tetrahedral simply. Okay, and then if it is tetrahedral, then principal axis is C3. It is more than 1 in number. So point group become 3D. It is a special point group. You can have a any, suppose you can have a, you can take any other shape. Para dichlorobenzene and para chlorobromobenzene. Which one is the principal axis in a first case? दोनों में principal axis कौन सी है? C4. C4. C4 होगी? सर पहले C4 होगा. पहले में C4 और हमें C2. C2, yes, passing through bromine, carbon and chlorine. This is C2. चलो second में ये C4 होगा सर. C4 होगा सर. ये कौन सा होगा? C2. ये भी C2 है, yes. But see, in the first case, there is no other 2C2 which are perpendicular to 2C2. See, here you cannot take a C2. Okay. यहाँ पर ले सकते हैं. C2 और But here you can have a 2C2. One is on your side, second one is. Okay, so here C2 is perpendicular to 2C2. Here C2 is not perpendicular to other 2C2. And therefore, here symbol use is C2.
Here it's a D2. Next, you can have a see here sigma V plane. This is sigma V and second one is this one. So point group becomes C2V, but here it's a point group become, you can have a see sigma H is also there. H. So it's a D2H, good. Okay, so this is up to here, it is for molecular point group. Now we go for certain laws of group order, that is different laws, law of multiplication. Okay, so point group topic is over. Now is there any doubts, anybody having any query? सर Yes. टेट्राहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल एंड इकोसाहेड्रल ये तीनों तो बता देंगे स्पेशल पॉइंट ग्रुप में, लेकिन सर से जो डिसीजन ले रहा है ना Cn इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, तो सर जब हम लोग C3V या D3V ले रहे थे तो उसमें भी तो Cn जो C3 है वो C2 से ज्यादा है, मतलब 2 से ज्यादा है। नहीं, ये किस में कौन सा केस है, एग्जांपल बताओ, ये आपके सामने है एग्जांपल, चलो यहाँ पे ही। सर मतलब ये हुआ कि जो नहीं, मैं बताता हूँ आपको इसमें ओके क्या ओके है। सर समझ गया सर, मतलब n सर मैं ये समझ रहा था ना n इज इक्वल टू ग्रेटर देन 2, लेकिन वो तो Cn इज ग्रेटर देन 2 है, मतलब नहीं देखो, तो ये जो है ना, एक से ज्यादा C3 होता तो स्पेशल होता। इस केस में क्या है, देखो इस केस में प्रिंसिपल एक्सिस भी C2 है। यस सर, C2 प्रिंसिपल एक्सिस इज आल्सो C2 C2, है। यस सर। ये भी C2 है, और बाकी के जो दो C2 है हाँ वो भी सेम ऑर्डर की एक्सिस है, इसलिए यहाँ कंफ्यूजन ये होगा कि सी इसमें तो तीन C2 है, हाँ तो Cn इज ग्रेटर देन, बट सी प्रिंसिपल Cn इज, इट इज अ प्रिंसिपल एक्सिस। इसकी बात करो, प्रिंसिपल एक्सिस तो इसमें ज्यादा है नहीं, ए वाली जो है ना इसको प्रिंसिपल एक्सिस बोलेंगे, बिकॉज इट इज पासिंग थ्रू मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम, तो ये ऑटोमेटिकली कौन सी एक्सिस हो जाएगी, ये दोनों सब्सिडरी, ओके इसलिए ये दो, इसको आपको अलग काउंट करना है, सब्सिडरी है, तो एक ही प्रिंसिपल एक्सिस हुई। बट जो टेट्रोक्साइड में क्या होता है इस केस में, सारी C3 है वो ऑक्सीजन जेनोन ऑक्सीजन जेनोन ऑक्सीजन जेनोन में से पास होती है, तो ये सारी एक्सिस जो है वो कौन सी एक्सिस हो गई, प्रिंसिपल ओके यस, इसलिए इसमें सब्सिडरी हम नहीं ले सकते है ना। बट आप ओके स्टेट फॉरवर्ड ऐसे केस लगे क्लोरोफॉर्म, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, इसमें प्रिंसिपल एक्सिस एक ही आएगी, दिस वन, बाकी C3 है ही नहीं, सो इस केस में से कौन सा पॉइंट ग्रुप आएगा, C3V ओके यस। नाउ सी, in order to multiply any two symmetry element, so you can have a certain laws. First one is the that is called, now point group आपको पता है कौन कौन से elements है वो कौन से point group में आएगा। Now if you multiply any two element, so you can have a, so first certain laws are there. First one is a order of group, law of group order, that is आप A cross B करोगे या B cross A करोगे, both are this same result. If you change the order, then result may not be changed. The matrix rule. So that is called as matrix rule. So that is, you can say it follow the group order law, and that is see multiplication of in any order, so result remains same. आपको ऐसे सी देखना है, C2V पॉइंट ग्रुप है, उसमें सिग्मा V प्लेन है, C2 एक्सिस है, तो आप चाहे पहले C2 प्रोसेस करोगे या सिग्मा V पहले करोगे, दोनों का रिजल्ट सेम आएगा, वो ऐसे पता चलेगा। फर्स्ट वी चेक द लेफ्ट हैंड साइड, आपको ऑलवेज राइट टू लेफ्ट फॉलो करना है, सी यू कैन फॉलो इट इज राइट टू लेफ्ट। यहाँ आपको C2 एक्सिस दिया है एंड सिग्मा V है, तो पहले आपको सिग्मा V करना है। सी मल्टीप्लिकेशन में रूल्स आपको राइट टू लेफ्ट जाना है, कैसे फॉलो करना है, तो पहले जो राइट साइड है वो प्रोसेस करना है। सो फर्स्ट यू गो फॉर सिग्मा V प्लेन, तो दोनों 1 and 2 एटम्स कैन चेंज देयर पोजीशन, ऐसे। बाद में क्या करना है, नेक्स्ट C2 रोटेशन देना है इसी तरह, तो आपको ऐसे रिजल्ट मिलेगा, सेम रिजल्ट यू आर गेटिंग। सो दिस इज योर लेफ्ट हैंड साइड, भी राइट हैंड साइड आप चेक करोगे तो सेम रिजल्ट मिलेगा इसी तरह। पहले आप C2 रोटेशन देंगे, उसके बाद सिग्मा V देंगे, रिजल्ट रिमेन सेम, ओके, एंड दैट्स फॉर यू कैन चेंज द ऑर्डर, द रिजल्ट may not be changed. In ammonia, what happens, now we go for
multiplication table, but before going to starting it, I think there are certain rules are there. May not be mentioned. Okay, fine. So first I will tell you the rules and then we go for this ammonia. See, there are four main rules which is keep in mind whenever you are multiplying any two symmetry element. These are the first one is the law of multiplication. Second one is the law of identity. Third is the law of reciprocal and law of association. So what you can do, the law of symmetry, first one is law of multiplication. What is it? So if you see multiply any two elements, suppose A cross B, then your answer becomes C. Then A and B belongs to group G, point group G, then C is also belongs to G. That means product is of the same group. See आपके पास suppose C2V point group है, तो इसमें चार symmetry element है. One is identity, second one is C2 axis and दो sigma V. तो इसमें से आप कोई भी दो एलिमेंट का मल्टीप्लिकेशन करोगे, सो योर आंसर इज कम्स फ्रॉम आउट ऑफ दिस फोर पॉसिबल ऑप्शंस ओनली. ये चार में से ही एक होगा. ओके, इट इज अ प्रोडक्ट इज अ ऑफ द सेम ग्रुप. दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन. सपोज आप C2 इंटू सिग्मा V करते हो ऐसे, तो ऐसे आप H2O मॉलिक्यूल कंसीडर करके, ये आपके C2 एक्सिस है, दिस इज योर C2 एक्सिस एंड दिस इज ऑल्सो सिग्मा V. तो पहले आप सिग्मा V डैश प्रोसेस करोगे तो ऐसे रिजल्ट मिलेगा. उसके बाद आप C2 एक्सिस अप्लाई करोगे, सो यू आर गेटिंग ऐसे. तो ये डायरेक्ट इसमें से चाहिए, सो यू कैन ओनली यू कैन डायरेक्टली गो फॉर which process, which operation you can directly go for. E. This has to E नहीं ले सकते. ऐसे ही मॉलिक्यूल चाहिए, आप ऐसे कर दो सिर्फ सिग्मा V डबल डैश. E क्यों नहीं ले सकते वो भी बताता हूँ. ऑक्सीजन पे कितनी लोन पेयर होगी? दो. एक लोन पेयर आगे होगी, एक लोन पेयर पीछे होगी. ओके, तो यहाँ पे दो लोन पेयर है ऑक्सीजन पे, समझ लो. इट इज ऑन फ्रंट साइड एंड अनदर लोन पेयर इज ऑन बैक साइड. इसी तरह दो लोन पेयर होगी. अभी आप सिग्मा V डैश प्रोसेस करोगे तो सिग्मा V दोनों लोन पेयर में से पास होता है, सो लोन पेयर डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन. इज इट ओके? लोन पेयर अपनी पोजीशन चेंज नहीं करेगी. उसके बाद जैसे आप C2 रोटेशन देगी यहां से, तो लोन पेयर क्या होगी? लोन पेयर भी चेंज हो जाएगी. अभी आप फर्स्ट स्ट्रक्चर और ये स्ट्रक्चर देखोगे तो पता चलेगा दोनों में लोन पेयर की पोजीशन अलग अलग है. इसलिए आप ई ऑपरेशन करोगे तो ई ऑपरेशन का मीनिंग ऐसा है कि नथिंग इज डू इन मॉलिक्यूल, कोई भी चेंज करना नहीं है इसमें, तो आपको सेम रिजल्ट मिलना चाहिए. बट यहाँ पे सी बिकॉज ऑफ द लोन पेयर आप ई ऑपरेशन नहीं कर सकते. बट डेफिनेटली यू कैन टेक सी दिस प्लेन सिग्मा V डैश सिग्मा V डबल डैश, दैट इज प्लेन ऑफ योर लैपटॉप. तो एक लोन पेयर जो लैपटॉप के पीछे है, या तो मोबाइल के पीछे ग्रीन कलर वाली, वो आगे आ जाएगी यहाँ पे, और जो फ्रंट साइड है वो बैक साइड चली जाएगी. So you are getting this structure now. Is it clear? Yes, sir. So you can see multiply any two symmetry elements, so result becomes same. Result become of this same element from this given group. This is called law of multiplication. Second one is law of reciprocal. What it means? Law of reciprocal means कोई भी reciprocal means opposite. So you can do any process and do its opposite, so result remains same.
result does not change. This is called law of reciprocal. Suppose if you do C2 and C2 inverse, you can do A into A inverse, so result becomes same. आप C2 से यहाँ से clockwise रोटेशन देंगे पहले एंटी क्लॉकवाइज, या तो आप C2 करोगे C2 इनवर्स, दैट इज कॉल्ड क्लॉकवाइज रोटेशन, एंड देन C2 इनवर्स करोगे इसी तरह से, दिस इज C2. सो आपका रिजल्ट जो है C2 इनवर्स क्लॉकवाइज रोटेशन, सो ऐसे रिजल्ट आएगा. उसके बाद आप C2 करोगे एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन, सो रिजल्ट बिकम ओरिजिनल मॉलिक्यूल, दैट इज कॉल्ड आइडेंटिटी. दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ रेसिप्रोकल. कोई भी प्रोसेस करते हो एंड उसका रेसिप्रोकल, सो रिजल्ट रिमेन्स सेम. इज इट क्लियर? सेकंड Yes, लॉ. sir. Yes. Third one is the law of identity. If you multiply any symmetry element with E, result becomes same symmetry element. You can have a C multiplication of C2 into E. That means पहले आप E process करोगे ऐसे, तो same ही result रहेगा. E means nothing is due in molecule. There is no any change in the molecule. उसके बाद आप C2 process करोगे, so यहाँ H2 आ जाएगा, यहाँ H1. So result become directly you are getting by C2 operation. So means you can multiply E with any symmetry element, so result remains same. Result does not change. So this is called law of identity. And fourth one is law of association. Suppose आप A और B को एसोसिएशन बना के उनका ग्रुप बनाते हो और उनकी प्रोसेस C के साथ करते हो, so the same A result you are getting by multiple making BC group आ of जाए. B and C. Good. इसको ऐसे प्रूव करेंगे इन द केस ऑफ H2O. सपोज आपके पास C2 एंड सिग्मा V डैश है, उसका मल्टीप्लिकेशन आप सिग्मा V डबल डैश के साथ करते हो, so same result you are getting once you go for सिग्मा V डैश एंड सिग्मा V डबल डैश. से इसमें पहले आपको ब्रैकेट वाली प्रोसेस करनी है. सपोज आप पहले लेफ्ट हैंड साइड प्रूव कर रहे हो, तो उसमें पहले आपको एक ब्रैकेट रिमूव करना है, उसका रिजल्ट फाइंड आउट करना है. दिस इज योर ब्रैकेट. तो पहले आपको H2O मॉलिक्यूल में सी दिस इज योर सिग्मा V, समझ लो दिस इज सिग्मा V डैश है एंड दिस इज C2 एक्सिस. व्हाट इज इट्स रिजल्ट? पहले आप C2 अप्लाई करोगे तो सिग्मा V अप्लाई करोगे तो H1 and H2 can change their position. Okay. Yes, sir. सिग्मा V डैश अप्लाई करोगे, सो वो लोन पेयर में से पास होगा, सो ओनली H1 एंड H2 कैन चेंज देयर पोजीशन. Lone pair उसके remain constant. यस, उसके बाद आप क्या करोगे? C2 रोटेशन C2. देंगे तो लोन पेयर चेंज हो जाएगी ना, इसलिए Yes, स्ट्रक्चर sir. ऐसे आएगा H1 एंड H2, बट यहाँ जो है वो प्लस प्लस थे, वो माइनस माइनस हो जाएगा. दैट मीन्स लोन पेयर चेंज हो जाएगी. तो ये आपको डायरेक्ट इसमें से चाहिए तो क्या करोगे आप? Symmetry. सिग्मा V डबल डैश, तो इसकी जगह आप सिग्मा V आप डबल डैश रख दो. अभी चलो सिग्मा V डबल डैश इंटू सिग्मा V डबल डैश, दो टाइम ये प्रोसेस करोगे, सो रिजल्ट बिकम E ऑपरेशन. दिस इज योर लेफ्ट हैंड साइड. व्हाट्स अबाउट राइट हैंड साइड? पहले ब्रैकेट रिमूव करो, पहले सिग्मा V डबल डैश प्रोसेस करो, दैट मीन्स लोन पेयर में से पास होगा. सॉरी, आपका मोबाइल का प्लेन है तो लोन पेयर की मिरर इमेज मिलेगी. ये प्लस प्लस है तो सिग्मा V डबल डैश अप्लाई करोगे तो क्या होगा? H2 is lone pair change होगा. लोन पेयर सिर्फ चेंज होगा, बाकी सब इसलिए प्लस प्लस का माइनस माइनस कर दिया, बाकी एटम्स अपनी जगह रहेंगे. उसके बाद आप सिग्मा V डैश अप्लाई करते हो ऐसे, तो नाउ H1 जो है Lone वो pair H2, remain यहाँ constant. पे H1 आ जाएगा, लोन पेयर कांस्टेंट रहेगी. अगर डायरेक्ट सो ये स्ट्रक्चर चाहिए आपको, सो यू कैन हैव ए Double C. विच ऑप्शन?
C2 C2 ऑप्शन, यस, सोलन पर भी चेंज हो जाएगी, हाइड्रोजन भी दोनों चेंज हो जाएंगे, C2। सो इनकी जगह C2 आ गया। नाउ C2 into C2, 2 टाइम C2 करोगे, एक बार 180 पे रोटेशन देंगे, दूसरी बार 180 पे, सो सेम सही, या सेम ई ऑपरेशन। सो दोनों साइड से ये आ गया। सो आई हैव प्रूव दिस इज लॉ ऑफ एसोसिएशन। So bracket process is always done first, and always you can do the symmetry operation from right to left. So see, these are the various law of group theory. Now in the next lecture we are going to move into very important application part of this group theory, because up to here this content you may have learned at your graduation level, but now on, yes, but now onwards whatever topic I will going to, या ये सारे हो गए ग्रेजुएशन के ही टॉपिक है, बट कई यूनिवर्सिटी में वो मिसिंग है। बट नाउ ऑनवर्ड्स whatever topic that is application part of group theory that I will going to take, so that will be new topic for you, and it is there at MSc level. So that's why you are requested to attend that. Probably in the today evening we will take the lecture. Yes सर आप क्या क्या चैप्टर पढ़ाएंगे इस सेमेस्टर में? ये जो पेपर है ना, सी ये पूरा पेपर इनऑर्गेनिक वाला, इसमें 3 यूनिट है। पहले से थैंक यू वेरी मच।